Welcome to Pratham Test Prep. My name is Uttam. Today we are going to discuss about the Oberoi Steps Application Process 2023. So guys, in this video we'll talk about the different hotel management program and the specialization that Oberoi has to offer. Along with that, we'll see the selection process, test pattern, and the overall step-by-step process for filling up this form. तो शुरू करते हैं गाइज. यहाँ पे देखते हैं प्रथम नोटिस. सो दीज आर द बेसिक डूज एंड डोंट. एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं. नाउ वी हैव द स्टेप डिटेल्स. सो ओबरॉय हैज़ टू ऑफर स्पेशलाइजेशन इनटू किचन ऑपरेशंस, हाउसकीपिंग ऑपरेशन, फ्रंट ऑफिस एंड फूड एंड बेवरेजेस. सो ये स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है. द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम यू कैन गो थ्रू इट वंस. लाइक मैं आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स गो थ्रू करा देता हूँ. लाइक IGNU is offering the degree program for this course, so that is the Bachelor of Tourism Studies. Then you also have leave policy with this program. So 3 weeks of study leave for exam preparation you have 3 weeks of annual casual leaves. And here we have the eligibility criteria. So eligibility criteria में दिखते हैं. So students who have been in between of 18 and 20 years of age, they can apply. So above 18 and 20 years, below 20 years of students can apply as on 1st July 2023. So with this requirement, they also have the eligibility for 12th class passed, and with the English language compulsory subject, and the minimum score should be 70% and above. So now we have the selection process. So selection process में देखते हैं. So Feb to April, in between they are taking the registration. Then after they have the assessment and interview rounds. So here we have April to May. So in between they are going to take the assessments through different process, and the interview round is there. Then they have the result between June to July. They will gonna declare the results. So आपको क्या करना है, इंटरव्यू राउंड के लिए आपको अपना एप्लीकेशन को प्रिंट करके लेके जाना. Along with that, passport size photograph is required. Now we have the registration process guys. रजिस्ट्रेशन में देखते हैं आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है. सो द कॉलम विच इज़ मैंडेटरी, आपको स्टार मार्क करके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. सो ऑल द कॉलम विच हैज़ द स्टार मार्क, ये सारे मैंडेटरी कॉलम से आपको फिल करने हैं. सो मिडिल नेम इज़ नॉट मैंडेटरी, आप इसको स्किप कर सकते हैं. बाकी डिटेल्स आप फिल कीजिए. स्क्रॉल डाउन कीजिए. जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा वेयर यू हैव टू फिल द होटल ऑपरेशंस और ईदर द किचन ऑपरेशंस. आपको दोनों में से एक बेसिक प्रोग्राम चूज़ करना है. देन यू हैव द सब प्रोग्राम. देन सब प्रोग्राम में आपको फ्रंट ऑफिस एंड फूड एंड बेवरेजेस का ऑप्शन मिलता है, और either you can choose the housekeeping department. Now you have preferred interview locations. So preferred interview locations, we have different cities, so you can choose your city accordingly. Now you have to fill the education details, where you have to fill 12th class detail. Here in the year of completion, in case you are appearing this year for CBSE board exam 12th class, you can select 2023 as appearing. Then you can choose your board and you can skip rest of the details. But for 10th class you have to fill all the details. Here you have to select the board, you have to select the year of completion, name of school, subject studies. So यहाँ पे कॉमा डाल के बाकी सब्जेक्ट्स को मेंशन कर सकते हैं. देन द इंग्लिश मार्क्स. सो 10th क्लास में आपके ओवरऑल कितने मार्क्स है इंग्लिश में आपको यहाँ मेंशन करना है. एंड देन द ओवरऑल परसेंटेज. नाउ यू हैव द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वेर यू हैव टू फिल फॉर हेल्थ एंड राइट अप. सो हेल्थ सेक्शन में आपको फिल करना है अपना हाइट. सो हाइट यहाँ पे फीट एंड इंचेस में आप फिल कीजिए. वेट कितना है यहाँ पे आप यहाँ पे मेंशन कीजिए. सो अगर आपका ग्लासेस है या फिर आपके लेंसेज हैं, आपके आई साइड्स लेफ्ट राइट, वो यहाँ पे मेंशन कीजिए. एंड देन यू हैव टू फिल द ब्लड ग्रुप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. राइट अप आपको यहाँ पे सेक्शन में यहाँ पे मेंशन करना द एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ एंड द अचीवमेंट दैट यू हैव. सो यहाँ पे आप बाय पुटिंग कॉमा आप डिफरेंट अचीवमेंट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. Then you have a write up to write why you wanted to join hotel management या फिर hospitality industry. So उसके बारे में आपको यहाँ 500 characters में ये write up लिखना है. Then you also have a write up with 500 characters limit. So what does the excellent guest service mean to you, वो आपको यहाँ पे mention करना है और वो आपको लिखना है. And then you have to click on this checkbox in case is one of your relative is employed with Oberoi group or in the past they have been associated. So इस checkbox पे click करेंगे. then scroll down करेंगे. now you have to upload a photograph. so यहाँ पे आपको photograph upload करना है अपना ही. and then you have to click on this checkbox. उसके बाद आपको submit पे click करना है. जैसे आप submit पे click करते हैं आपके पास confirmation आ जाएगा that your registration is done, your registration number is here, and you can also click to print the application or you can save it as PDF. now you have the
email confirmation on your registered email address. So ये डिटेल्स आपके email ID पे आ जाएगा. सो पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी इशू आया या फिर कोई डाउट्स है आपके, सो आप अपने सर्विस मैनेजर को ही कंटैक्ट कर सकते हो. डिटेल्स मैं आपको आगे शो करूँगा. बट इन बिटवीन लाइक अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन ऐसा डिटेल्स जो आपने सबमिट कर दिया एंड यू वांट टू एडिट इट, सो यहाँ पे आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा वेबसाइट पे ही. आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, बाकी डिटेल्स फिल करेंगे एंड उसके बाद आपको एप्लीकेशन एडिट वाला विंडो ओपन हो जाएगा. नाउ यू हैव द स्टेप असिस्टेंस. सो आप ओबरॉय को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी फर्दर डाउट्स एंड क्वेरीज. सो यहाँ पे ईमेल आईडीज मेंशन किया गया है, सो आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं. यू ऑल्सो हैव द प्रथम्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर सर्विस मैनेजर्स. सो प्रथम के सर्विस मैनेजर्स को कनेक्ट कर सकते हैं. आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हैं. सो वन ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव विल गेट इन टच विद यू एंड हेल्प यू टू फिल अप द फॉर्म करेक्टली. आपको हम गाइड करेंगे. सो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं या फिर आपने कोई काउंसलिंग सेशन नहीं लिया, आप लेना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें, सो आप हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं. सो हेयर वी हैव द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सो जिस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए. You also have the website, you also have the access to website. So आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं prathamonline.com. इस वेबसाइट पे जाके आप लॉगिन करके बाकी कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन डिटेल्स चेक कर सकते हैं. इस चैनल पे आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी, लाइक फॉर्म फिलिंग वीडियोस के अलावा यू कैन ऑल्सो हैव the legal darpan videos. So that is the legal darpan series that we are running for law students. Then we also have vocabulary boosters, we have current affairs sessions. So guys, ये आप सेशंस को ज्वाइन करके, लाइव सेशंस को ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं और अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो रजिस्टर विद अस, और रजिस्टर करने के लिए जो प्रोसेस है उस फॉलो करने के लिए आप कॉल कीजिए या फिर हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए. होप यू हैव लाइक दिस वीडियो गाइज एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड उनको हेल्प कर सकते हैं फॉर्म को करेक्टली फिल करने के लिए. साइनिंग ऑफ गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे, गुड लक, थैंक यू, बाय.